Assalamualaikum grade 7. Welcome back grade 7. We have completed the reading from this chapter science skill. Now we will start written working from this chapter. So now let us start this chapter. First of all, maintain your copy, open your copy and open your index. Okay, now what you do, so you will do that first write down the date, mention the chapter name. After that, open the next page and write down the heading, first semester work has been started. After that, again open the new page and write down the heading, chapter number 1, science skills. Okay, now let us start working from the words meaning. First write down heading, words and meaning. Okay, start from here, words and meaning, and make sure draw the line. फर्स्ट सिस्टमेटिकली, मुनज़्ज़म तरीके से, लॉजिकली, मुंतकी तौर पे, इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात करना, एप्रोप्रिएट, मुनासिब, डेंजरस, ख़तरनाक, ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा, एक्सपेरिमेंट, तजुर्बा, मास, बड़ी रकबा, ज़मीन, कीमत, मेजरमेंट, पैमाइश, नाप, केयरफुली, एहतियात. Okay, if you done it this, so now come here the question answer. Here is question answer. Write down the heading and start from the question number 1. So question number 1 is, what is data? Data क्या होता है? So answer is, the scientific information is called data. Scientific information data कहलाती है. Now question number 2, what advantages does line graph have over a bar chart? लाइन ग्राफ के बारे में बताना है, उसके एडवांटेज फ़ायदों के बारे में. So answer is, the line graph are probably better when there are many data points to be plotted, and bar chart when there are only few. ओके, बार चार्ट हमारे लिए क्यों अच्छी होती है? मैंने आपको रीडिंग में भी बताया था कि जो भी हम इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं तो हमने जो लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देन ये हमें शो कर रहा होता है हमारा कि कितना काम हुआ है, क्या, जैसे कप ऑफ टी को हमने लिया था. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर वॉल्यूम, लेंथ, टाइम, मास? तो कौन कौन सा यूनिट हम किस में यूज़ करते हैं? वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं लीटर के लिए, लेंथ हम मीटर के लिए, मास इज़ यूज टू किलोमीटर, टाइम इज इन क्वेश्चन नंबर 3, विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर वॉल्यूम, लेंथ, टाइम, मास? तो कौन कौन सा यूनिट हम किस में यूज़ करते हैं? वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं लीटर के लिए, लेंथ हम मीटर के लिए, मास इज़ यूज टू किलोमीटर, टाइम इज इन क्वेश्चन इज 4 क्वेश्चन. मेक अ लिस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन योर होम. हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी लिस्ट बनाती हैं, वो जो आपके घर में मौजूद होते हैं. सो थर्मोमीटर, पॉइंट डाल के लिखना है. फर्स्ट थर्मोमीटर, सेकंड मेजरिंग सिलेंडर, 3 बीपी ऑपरेटर, 4 ट्रैप मेजर. ये हर किसी के घर में मौजूद होती हैं. ओके ग्रेड 7, कम हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. सो इट इज़ द प्रॉब्लम, what is the average mass of the one nail if 15 nails have a mass of 200 g? ओके, ये प्रॉब्लम है हमारे पास. मैंने रीडिंग के दौरान आपको समझाई थी. आई टोल्ड यू व्हाट इज़ इट, ये क्या होता है और आपको क्या करना है. सो आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है. 15 nails have 2 g एंड यहाँ पर 15 nails have हमने रख के यहाँ पर इसको डिवाइडिंग करेंगे, यानी क्रॉस करेंगे. क्रॉस करने के बाद जो इसका आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, वो आएगा हमारे पास 4g. ओके, सो यहाँ पर 1 nail इज़ अ 4gm. नाउ कम हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. व्हाई द साइंटिस्ट यूज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? साइंटिस्ट यूज़ क्यों करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? So answer is, scientists are use measuring instrument to make work easily and accurate. हमारे साइंटिस्ट इसीलिए
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे काम को ईजी बनाता है, आसान बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इसको आप राइट डाउन करेंगे। ओके, यू हैव टू राइट डाउन दिस हाउ फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। ओके, द 3 main areas of the study in science and write down the points A, B, C, D and tick mark the right question. Okay, सारे आपको ऐसे ही करने हैं, then tick mark the right question. So यहाँ पर है हमारे पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, biology, chemistry, physics. So right answer is biology, chemistry and physics. Okay, second is which area science of study in the living world around us. So answer is biology. Why should you wear the safety goggles during practical science lesson? So answer is B, to protect your eyes from damage. Fourth, which of this the measurement of length? Measurement of length A, सेंटीमीटर, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। 5 is the volume of an object can be found by is the multiplying is. So answer is C, length by its breadth by its height. If you complete this multiple choice question, so come here to the question number 8 is true false. Write down the heading true false and write down the true false. Chemistry is the study of the physical world around us is false. As a scientist get older, they no longer have a bother about the working safely is true. The 3 your sense are no use during a scientific investigation it's false. अगर हम अपने सेंस से यूज़ नहीं करेंगे तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? Fourth is the mass of an object can be found by the weighting it is true. Degree Celsius and degree centigrade are the same thing is true. Okay, if you complete this chapter, okay, here is complete this chapter, do neat and clean work. Okay, till then the next chapter.